Thank you for joining us on This Is Exclusive, ladies and gentlemen. In 2 states across India, there could be many more soon. Children have died. The conservative number we have is 8, but that number could increase. And they have died because they were given cough syrups from banned companies. Now, how did these cough syrups reach the poorest of the poor? Because they went to a government hospital. They were given free over-the-counter cough syrups from a government hospital, and they died because a banned blacklisted firm got a government contract, and nobody is answerable for that 8 deaths that have taken place. And on the show tonight, we are getting you reports not just from these families from Madhya Pradesh, from Rajasthan, but also from the doorstep of these companies that were blacklisted but continued to get government contracts. Here are the headlines on This Is Exclusive. Eight children dead in 2 states, their deaths being linked to a cough syrup manufactured by companies that were banned. Kaysons Pharma, a company behind the poisonous cough syrup, faced action in 2023, failed quality checks, but yet continued to get government contracts. Contaminated substance DEG reportedly found in the kidneys of the children given to the poorest under the free government medicine scheme. As Pakistan fires on civilians, 15 killed as the protests in POK intensify. Thank you for joining us on This Is Exclusive, ladies and gentlemen. Before we get you the details of the killer cough syrup and the investigation carried out by Republic TV, breaking news coming in as more Maoists have surrendered. We have pictures coming in on the show. Let's go across straight to that. On top of 7 p.m. Surrender in Bijapur, Chhattisgarh. 103 Maoists have laid down their arms. The anti-Maoist operation in Chhattisgarh's Bijapur district achieving major success. 103 Maoists have surrendered to security forces under the Puna Margam campaign. The group includes 49 wanted Maoists, and all 49 carried bounties totaling over 1 crore rupees. And of the 103 who have surrendered today, high-ranking cadres like the divisional committee member, ACM, area committee member, large-scale surrender of Janatana Sarkar. This is what they call themselves. A clear indication. Those are pictures coming in, ladies and gentlemen, of 103 Maoists who've laid down their arms in Bijapur, Chhattisgarh. Indication that the Maoist groups are losing their ground support. The main reason for the surrender is the killing of their top leadership, internal conflicts within Maoists, and disillusionment with development work that is actually taking place. And all the surrendered Maoists were provided an incentive check, 50,000 rupees each, as part of the rehabilitation policy. And we have the Bijapur superintendent of police who also spoke, calling it a defeat of the ideology of violence, appealing to other Maoists to return to social mainstream. एक विशेष दिन था क्योंकि आज गांधी जयंती भी था और साथ में दशहरा भी था। उस दिवस में 103 माओवादियों ने आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया और इनमें से जो एक डीवीसी स्तर का 8 एसीएम स्तर के और अलग अलग कंपनी और अलग अलग प्लाटून्स में, इसके अलावा 5 जनता सरकार के पूरे मेंबर्स ने आज आकर यहाँ सरेंडर किया है। इन पर कुल 1 करोड़ 6 लाख का इनाम था जो आज यहाँ इनामी नक्सली आज सरेंडर किए हैं। इस प्रकार बीजापुर में अगर देखेंगे तो 1 जनवरी 2024 से लगभग 599 नक्सलियों ने
आत्मसमर्पण किया। देखिए, जिस प्रकार से पूरी की पूरी जनता सरकार जो इनकी पूरी आरपीसी होती है वो आकर सरेंडर कर रही है, तो उससे ये लगता है कि कहीं न कहीं इनकी इनका जो एक संगठन है वो बिखर रहा है। सभी मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, कहीं न कहीं अंदर से भी दबाव है, इस वजह से कई सारे माओवादी आ नहीं पा रहे हैं। मेरी सभी से यही अपील है कि आप मुख्य धारा में जुड़े, आकर आत्मसमर्पण करें और सरकार की योजनाओं का लाभ लें। We have Bharat joining us live from Bijapur. Those pictures came in this evening. A short while back, 103 Maoists have laid down their arms. Bharat, आपको अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से सरेंडर किए, आत्मसमर्पण किया, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उस ऑपरेशन का काफी एक जो असर है वो देखने को मिल रहा है। यही एक वजह है कि सैकड़ों की तादाद में आज जो माओवादी है वो पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। वही बीजापुर एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने कहा कि बहुत से ऐसे माओवादी हैं आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनसे भी वो अपील कर रहे हैं कि जिस तरीके से ऑपरेशन हो रहे हैं कि वो अंतिम जो पड़ाव है, जो डेडलाइन सरकार ने तय किया है कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद को समाप्त कर देंगे। ऐसे में लगातार जो ऑपरेशन है तेज हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो प्रभाव है माओवादियों के संगठन में वो झुकता हुआ पड़ा, उनकी जो रीढ़ है वो टूटते हुए नजर आ रही है। ऐसे में वो समर्पण करने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से बताया ये जा रहा है बीजापुर एसपी के द्वारा कि बहुत से ऐसे माओवादी हैं जो समर्पण करना चाहते हैं, लेकिन समर्पण करने के लिए वो आ नहीं पा रहे हैं। उनसे वो अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर सरेंडर करते हैं तो उनकी जान बच सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन हो रहे हैं, इस तरीके के ऑपरेशन अगर लगातार कंटिन्यू होंगे तो कहीं ना कहीं माओवादियों का जो ढांचा है वो खत्म हो सकता है, जिस तरीके के ऑपरेशन देखी जा रही है। वही अगर बात की जाए, आज जो जिन माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया उसमें बहुत से ऐसे माओवादी हैं जो बड़े कदर के माओवादी हैं, जो बड़े बड़े घटनाओं पे शामिल रहे हैं और बड़े बड़े जो इनामी घटनाओं पे शामिल रहे हैं। ऐसे में उनकी अगर बात की जाए, वो भी आज आत्मसमर्पण किए हैं। उससे कहीं ना कहीं पुलिस को एक बड़ी सफलता देखी जा रही है। वहीं इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, सरकार की जो पुनर्वास नीति है, उस नीति की अगर बात की जाए, उनको जिस तरीके से फायदा होना चाहिए उस पर भी सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, तो वाकई इससे प्रभावित होकर भी जो माओवादी हैं वो समर्पण करने के लिए मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ जी, थैंक यू भरत फॉर दोस डिटेल्स। टाइम बहुत कम है, मैं आता हूं आपके पास। विल कम अगेन टू यू। Ladies and gentlemen, in India, it's the poorest of the poor who are poisoned, and systematically. The story of the children who have died in both Madhya Pradesh and Rajasthan. 6 of them died in Chhindwara district of Madhya Pradesh alone. 2 died in Rajasthan due to kidney-related complications within a month. According to the families of these children, initially they suffered from cold, from cough, from fever, and after that their kidneys became affected. Condition worsened, and that's been the trend across all these cases. Initial investigations have revealed a frightening link. Diethylene glycol or DEG contamination has been found in the kidney samples of the affected children. DEG or diethylene glycol is a toxic chemical linked to mass poisonings from contaminated medicines worldwide. Republic spoke to the family members, the poorest of poor, killed because these cough syrups were given to them in a government hospital. How did these syrups pass state drug procurement process, and didn't those who approved these medicines know about the use of DEG? There are many questions. Here's what the families are telling Republic this evening. उसकी भी मौत किडनी फेल होने से हुई है। हम बात करते हैं उसके परिवार के लोगों से। ये उसका घर है, माँ बाप है। आप बताइए, आपकी बेटी कब बीमार हुई थी? 14 तारीख। 14 को। क्या बुखार हुआ था? हाँ, बुखार था। फिर कहाँ दिखाया था आपने? हमने ये सरकारी में दिखाया पहले, फिर प्राइवेट पे दिखाया, फिर उसके बाद यानी कि सोने के पास ले गए। उसने क्या पता है, हम पता नहीं, बताया भी नहीं, बीमारी काहे के कारण खत्म हो गई। तो जो दवा दी गई, उन दवाओं के बाद बच्ची के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया था? नहीं आया। नहीं। मतलब बीमारी रही, सही नहीं हुई? बीमारी सही नहीं हुई। और बीमारी बढ़ती गई क्या? बढ़ती गई, थोड़ा सा बढ़ती गई, तो फिर वो खत्म ही हो गई। पोस्टमार्टम कराया था? नहीं करे हमने। आपकी बेटी थी श्रेया? हाँ। तो बुखार आया, फिर डॉक्टर को दिखाया, तो दवा देने से कुछ सुधार हुआ था? नहीं हुआ, कुछ सुधार नहीं हुआ दवा देने से। बिगड़ती गई और हालत। अच्छा, तो जो अब आप
पढ़ते होंगे, देखते होंगे जो खबर आ रही हैं, जो स्वास्थ्य विभाग और 2 सिरप जो है उसे प्रतिबंधित किया है, तो आपको लगता है वो जो दवा में कुछ गड़बड़ी थी जिस वजह से बच्चे की मौत हुई? शायद ऐसे ही कुछ रहा होगा। छिंदवाड़ा जिले के परासिया ब्लॉक में 6 मासूम बच्चों की मौत किडनी फेल होने से हो गई। सबसे पहले अदनान, जिसकी उम्र 5 साल से कुछ महीने ज्यादा थी, उसकी हुई। और मेरे हाथ में अब ये जो पर्चा देख रहे हैं, ये अदनान का ही पर्चा है। मैं उनके घर पर मौजूद हूं। अदनान 21/8 यानी कि 21 अगस्त को अदनान बीमार हुआ, उसको बुखार आया। परिजन है अदनान के, माता पिता हैं, उनसे बात करेंगे। पहले पूछेंगे कि अदनान को क्या सिम्टम्स थे। नहीं, हम तो यानी कि हमेशा ही उन्हीं के पास ले जाते थे उसको, क्योंकि वो बच्चों के अच्छे डॉक्टर हैं। हमको नहीं पता था कि ये सिरप उसको नुकसान कर देगी। जब अब पता चल रहा है कि ये सिरप यानी कि देने से ऐसा कुछ हो सकता है, हमने यही वाली सिरप उसको पिलाए थे, इसलिए हमको ज्यादा दुख हो रहा है कि शायद हमारे बच्चे में जो चेंजेस आए 21 तारीख को दवाई देने के बाद से ये ऐसा कुछ हुआ है, जो उसके अंदर बढ़ते चले गया और हम उसको समझ नहीं पाए और डॉक्टर लोग भी समझ नहीं पाए। उसके बाद एक के बाद एक कई बच्चों की यहाँ मौत हुई। आपको लगता है स्वास्थ्य विभाग देरी से जागा, यहाँ पर दवा जो बैन की वो लेट की और बच्चों की जान बच सकती थी? हाँ, अगर पहले से पता लगा लेते कि ये दवाइयों की वजह से हो रहा है तो शायद हमारे बच्चे को हम बचा पाते और बाकी भी बच्चे बच जाते थे, क्योंकि हम सबसे ज्यादा भरोसा बच्चा अगर बीमार होता है तो डॉक्टरों पर ही करते हैं। ये वो सिरप है जो डॉक्टर ने लिखी थी? हाँ, यही वाली सिरप है जो अभी बताया जा रहा है कि इसमें इन्फेक्शन हो रहा है। तो हमारे बच्चे को सबसे पहले सर्दी खांसी बुखार आया था, तो यही वाली सिरप दी गई थी, जिसके बाद हमारे बच्चे में हमको लग रहा था कि वो बिगड़ती जा रहा है। And at the center of this big tragedy is a pharma company, Kaysons Pharma. It's a firm which faced action in the past. It's blacklisted. And this company has a history of violating the norms laid down, for which it faced regulatory action even in 2023. Despite the action, the tainted company continued to receive government contracts, ladies and gentlemen. They continued to get government contracts. And we are at the company's gates to investigate. They've all run away now. After the deaths, they've all escaped from their factory. Take a look. इस वक्त की मेरी मौजूदगी जयपुर के केसंस फार्मा के ठीक बाहर की है। सबसे पहले अगर आपको दिखाए तो ये वही केसंस फार्मा है जहां पे बच्चों के लिए कफ सिरप बनाई जाती है। कई सारे मेडिसिन यहाँ पे बनाए जाते हैं और यहीं से ये जो कफ सिरप है वो सरकारी अस्पतालों में उसकी सप्लाई होती है और ऐसे में जो बच्चे जिनको खांसी की शिकायत होती है उन्हें वो कफ सिरप दी जाती है। लेकिन इन दिनों ये जो मामला सामने आया है राजस्थान से वो काफी डराने वाला है, चौंकाने वाला है, क्योंकि केसंस फार्मा की तरफ से एक ऐसे कफ सिरप की सप्लाई हुई जिसे पीने के बाद कई बच्चों के किडनी में पूरी तरह से वो इफेक्ट हुआ और एक बच्चे की मौत का दावा भी इसी कफ सिरप की वजह से कहा जा रहा है। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाएं तो जब से ये मामला तूल पकड़ा है, जब से हमने रिपब्लिक भारत में ये खबर दिखाई है, उसके बाद से ही पूरी तरह से केसंस फार्मा के बाहर यहाँ पे ताला लगा दिया गया है। एक भी स्टाफ जो है वो आपको नजर नहीं आ रहा होगा। यानी आपको बताए तो सब कोई जो है यहाँ से भागे यानी फरार नजर आ रहे हैं, क्योंकि ताला लगा हुआ है। अंदर की तस्वीरें भी हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं। अंदर भी सारे गेट में ताला जड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे एक गार्ड की मौजूदगी तक नहीं है, क्योंकि सवाल कई गंभीर भी खड़े हो रहे हैं और ये पहला मामला नहीं है। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पहले भी केसंस फार्मा की दवाइयों में खराबी पाई गई थी, जिसकी वजह से उसे डिबार भी किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये भी है कि डिबार करने के बाद भी आखिर केसंस फार्मा की जो दवाइयां हैं वो अस्पतालों में उसकी सप्लाई होती रही और अब वो जो सप्लाई हुई है वो कई बच्चों की जिंदगियां जो है वो दांव पर लगी हुई है। आपको अगर हम यहाँ पे तस्वीरें दिखाएं तो ये देखिए, यहाँ पे आपको फूल भी नजर आ रहा होगा। यानी यहाँ पे जो लोग यहाँ पे काम करते थे उन्होंने ये फूल जरूर मंगवाए होंगे, लेकिन चूंकि ये मामला तूल पकड़ा है, एक बच्चे की मौत का दावा किया जा रहा है कि यहीं से जो कफ सिरप बना था उसी को पीने से उस बच्चे की तबीयत बिगड़ी है। यहाँ तक कि एक डॉक्टर जो है वो भी जो है बीमार बताए जा रहे हैं।
In fact, it's so bizarre because there are government hospitals involved, government doctors involved. In Rajasthan, a doctor even tried to assure patients that the syrup was safe. When he was confronted, this particular doctor consumed the medicine in front of the parents and even fainted a few minutes later. And not just him consuming it, he also tried giving it to an ambulance driver. This doctor, for some reason, maybe to reassure, God knows why, tried to take it himself and fainted. Let's go across to Dr. Sanjeev Bagai, who's joining us on the show tonight. Dr. Bagai, good evening. Dr. Bagai, he's the chairman of Nephron Clinic. Sir, how many times have you heard of a story like this, of a cough syrup that has caused such harm to children? And irony is, we talk about it, firms are blacklisted, the same firms get the contracts again, goes to government hospitals, the poorest of the poor die. That cycle repeats again and again, Dr. Bagai. Good evening. It's extremely unfortunate, and my prayers and condolences for the families who've lost their small children. It's unforgivable, it's unacceptable. Two parts to the story. One is there is a contamination which has been alleged of two ingredients. One is ethylene glycol and the second is diethylene glycol. Both are common contaminants of a solution of glycerine or glycerol, which is often added to cough syrups to add viscosity, to make it more thick. Now, the issue with both these contaminants, ethyl glycol or diethylene glycol, is it's colorless, it's tasteless, it's odorless, and it is highly toxic. It is very poorly excreted once it enters into the body. It's very quickly absorbed. Within 20 to 30 minutes, you start having side effects of intoxication, headache, nausea, vomiting. Within 12 hours, you go into what we call as metabolic acidosis. Your system starts shutting down. Your blood pressure goes through the sky, and small children enter stage 3, which is at the end of 24 hours, which is complete kidney shutdown, stop passing urine. And what this actually does is these ethyl glycol and diethyl glycol is it metabolizes into something which you call as oxalic acid. This forms crystals in your kidney, in your tubules, in your filtering part of your kidney, and your kidney is virtually shut down. Now, we've had this, it's like a deja vu story. We've had this incident in 2022-23 in which some amount of cough syrup batches were contaminated. Now, this is a systemic failure. We cannot allow these kind of things to happen. The second important part is a message to everyone that cough syrups should not be taken over the counter, especially in small children. These are all depressants as far as your respiratory system is concerned. It should only be taken under medical advice. It should only be given in a calculated dose. Do not use combination medicines and do not self-medicate. Lastly, very important is, these are rampantly given without prescriptions, without receipts by pharmacies and chemist shops. This has to stop in India. Unless until you don't have a valid prescription, which is valid for date and valid for the authenticity of the doctor, no medication of this sort, especially for children, should be dispensed from any pharmacy or chemist. Sir, but what is the, in your experience, what is the procedure when such contracts are given? Because we've seen most often it is not the tier 1, tier 2 cities. It's the poorest of the poor who get these medicines from government hospitals, where of course it's given free in most cases, right? So there is a lot of corruption also involved, which may be the primary reason why these firms, one, get the contracts, two, supply to government hospitals. I think very clearly there has been a lack of regulation. There has been no safety checks, no quality control, no random checks of audits as far as batches are concerned in terms of quality, ingredients, percentage concentrations. Like I said, it's a systemic failure. Now, when a bottle is given as a cough syrup or any other medicine for that matter, be it a fever medicine or an antibiotic, there is a level of trust a consumer has that that bottle will contain what it is said to contain. Now, if there are contaminants, then it's a huge issue. So I would still wait for the formal report. We need to validate what concentration of these
poison ingredients as contaminations entered into which batches of the bottle, what were the levels of these contaminants in the diseased bodies of the children, and more importantly, on autopsy, on biopsy, whether the kidney shows the effects of crystals being deposited. That will be a foolproof evidence. But having said that, I think this company should be thoroughly investigated. No product should be allowed to come into the market, and whoever is awarded the contract must be made accountable. Yeah. So my last question, I'll take a short response from you. This DEG or diethylene glycol, is it commonly used in cough syrups or rarely used in cough syrups in India? Because even the WHO has raised alarm on this. Yeah, so this is an industrial diluent. Let me make it clear. This is an industrial diluent. It's a poison. It's not supposed to be there in cough syrups at all. If it enters into a component of glycerine, which is the original component which is added in cough syrup, it is a pure, simple contamination. The toxic dose and the lethal dose, the window of safety is extremely narrow, and this causes almost 100% fatality once the children go into complete kidney shutdown. The issue really is when kids come into government hospitals, very often they may be malnourished, they may have other comorbid conditions, they may have fevers, they may have other infections. So as it is, your body is under stress. I must stress on this fact that kidneys in children have a very small margin of error. They are extremely vulnerable to any insult or injury. Your blood values don't show till almost 50% of your kidney function is lost. So we have to monitor the kidney function. We have to monitor the breathing of these children very, very minutely. Yeah. Thank you, sir. Thank you for joining us with your inputs on that. Poorest of the poor, ladies and gentlemen. And Republic will continue to investigate the story. Why is it that such banned, blacklisted firms get contracts again and again? And how is it that they get to supply cough syrups to government hospitals, especially in rural districts, in tier 2, tier 3 cities across India? Tracking the story closely. Thanks for watching. Arnab back on the debate at 8 p.m. Stay tuned.